So good morning to all the officers. So let's begin this training. Here I will be specifically telling in this video that how we can work in our e-file in eoffice. This is specifically related to other officers. So how they can actually open the file, do the noting, do quick noting, check a draft and sign on the draft, and finally send the file. Okay, so let's first begin. First we start with our ID. First we do the login. So in the address bar, click on eoffice.bihar.gov.in, that is the website, and click on the enter button. Okay, now you will be directed to your purchase page. Now simply you enter your username and then click on your password. Sorry, enter your password. Okay, after successfully entering the username and password, now we have to click on I consent to purchase and then click on next button. So now the OTP is sent on my mobile number. Now I will enter the OTP. Okay, enter the OTP and then click on the next button. Okay, so now we have successfully logged in. So by default the wow portal is open, that is work from anywhere. Here it is the complete virtual office setup. You can see which members are there in your office. That is here team mentioned. The person who are online, they are actually encircled in green. You will get the notification of your files and letters here, and you will see your name and your designation here. Make sure your name and designation is correct. Okay, now uh, in order to see all the files letters, you have to simply click on the e-file option. So click on the e-file option. Yes, now you are here in the file management system or the e-file module. Here you can see your name and your post. If you have got multiple posts, you can simply change your post from here. Currently I have only one post, so here it is Vaibhav Kumar and IT department e-office support. Now by default the inbox of file is open. So basically in e-office there are two important things. First is the receipt, that is the letters, and second one is the file. So by default file inbox is open. This is the working area. So here I am getting the list of files. You can see this file, this is the computer number, this is the file number, this is the subject. Okay, this is the user, the person that have sent you the file. This is the time on which the file is sent, and this is when you have read your file. Okay, so in order to view your file, you simply have to click on this hyperlink. You click on this file number. Okay, so simply click here. So now you are getting this. The file is in open state. This is the file number. This is the subject. Okay, and this is the computer number of this file. So first of all, let's see the overview. On the left side, you get the notes, जो टिप्पणी जो हम लोग अपने मैनुअल फाइल में देखते हैं, उसी तरह से यहाँ पे भी टिप्पणी है आपके लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में आपका जो पत्राचार का भाग रहता है. So
Here is the TUC, that is table of correspondence. Here you are getting all the list of the letters here. Okay, so this is one letter. So this is one letter receipt number. This is the letter subject name. This is the person who has attached the letter in this file when it is attached, and here is the page number. Okay, and the remark. Simply another letter is here. This one. This is the letter number. This is the subject of this letter, and this is the person who has attached this letter, and this is when it is attached, and this one is the page number. Okay, page number is done automatically, so no need to mention the page number. Sorry, no need to write the page number in eoffice. It is digitally mentioned. And here is the remark, and here is the issue that we have dispatched earlier from this file. Subject, issued on, and page number. So if you want to add more pages, the users can simply click on here, add receipt, and attach different letters. Okay, so this is basically done from the section level. So now we will see the noting. So here the notings are here in the form of note 1. This one is the noting. Okay, and automatically the username and his post is mentioned. The second one, the note 2. Okay, note 2, and his noting is there, and his name is there, name and post. Similarly, note 3, his name also is there, and post. So these name and post are done automatically. You don't need to write your name and post in the noting part. And here is the noting 4. Okay, so it is a blank note. So now let's write our noting. So in order to let me give you how we can write our note. So these are the notes that are previously there. Okay, now click on add green note here to start your noting. Yes, now you can write your note. See here, it is automatically saved. Okay, whatever we are writing, it is automatically saved. If you exit this and log in somewhere else also, then this noting is saved. Here one manual button is there where you can click on the save button and manually save it. You can use this if you want to save it manually if your internet connection is slow. Otherwise it is done automatically. Whatever you type, it is automatically saved. Now, yes, so this is saved. Now let's see here. Now this note actually is doing here one one first page that is mentioning, it is hyperlinked, that is referenced. Simply click on this page and you will see the letter. Okay, this letter is directly seen here. Okay, that is जो हम लोग फाइल में पताका लगाते हैं, फ्लैगिंग करते हैं, उसी तरह से आपका यहाँ पे रेफरेंसिंग हम लोग किया हुआ है, पहले से यूजर ने भेजा है, तो डायरेक्टली आपका वो पेज खुल गया। अगर आप कुछ फ्लैगिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे प्लीज सी पेज 1. Okay, and what you have to do, you have to simply select the page and click on this menu, right menu, and click on all. Yes, all, and just beside all there is the referencing button. Okay, now you can click here. Yes, all the pages of this files are completely loaded. Okay, now you have to click on all and you have to click on referencing button. Okay, here we have to mention the page number 1. So click here, write 1,
select the page and click on the OK button. So now your note is successfully referenced. Okay, sorry, your page number is successfully referenced. So click on this. Yes, and you can directly see the page. So what is the benefit? The benefit is that you can directly view a particular page instead of scrolling many pages. Suppose there are 100 200 pages in your file, you don't need to scroll. You simply need to put your hyperlink here, click here, okay, and do your referencing and directly go to a particular page. Okay, now this is actually referencing to correspondence. Now how we can do referencing to noting? We can simply write please see note 1. Okay, okay, write down the note. Suppose we want to reference this note, so write the note, select this, click on here and click on the previous note. Okay, now similarly beside this previous note button there is referencing button. Click here. Now select the note that you want to mention. So I will select the note, select the paragraph. So here we will select the paragraph that we want to mention. Suppose I want to mention all the paragraphs, so I will select all and simply click on OK button. So now it is successfully referenced. So I will simply click this. Now my note is directly referenced. Okay, so here by default the font is Arial, where we can write our English language. Now in order to write Hindi, you have to click here and select Kurtidev 010. Okay, and you can write your Hindi font. Okay, there, so here is the Hindi font. Okay, you can write your Kurtidev. Okay, so Kurtidev is also supported. Okay, now if you have successfully finished your noting, now what you want to do, you want to see the ड्राफ्ट दैट इज प्रारूप. अगर आपके फाइल में कोई पत्र है तो आप उसे देखना चाहते हैं, तो उसे देखने के लिए आपको कहाँ जाना होगा? आपको हमेशा प्रारूप के लिए ड्राफ्ट पे जाना होगा. तो आप क्या करेंगे? ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे. क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे जो सेक्शन में यूजर बनाते हैं वो क्रिएट न्यू ड्राफ्ट करते हैं. अगर आपको खुद का ड्राफ्ट बनाना है तो आपको क्लिक करना है व्यू ड्राफ्ट पे. माफ कीजिए, मैंने गलत बोला. अगर आपको इस फाइल में पहले से बनी हुई ड्राफ्ट को देखना है तो आपको क्लिक करना होगा व्यू ड्राफ्ट पे. देखिए ये हमारा एक ड्राफ्ट पहले से बना हुआ है. तो हम क्या करेंगे? अगर मान लीजिए एक कोई ड्राफ्ट है, मैं सीधे एक नया ड्राफ्ट यहाँ पे लगा देता हूँ. ठीक है, हाँ देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ड्राफ्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे व्यू ड्राफ्ट पे क्लिक करूँगा. व्यू ड्राफ्ट पे क्लिक करने के बाद मुझे बहुत सारे ड्राफ्ट के लिस्ट यहाँ पे दिख जाएंगे. तो जो ड्राफ्ट को मुझे अप्रूव करना है, मुझे उस ड्राफ्ट को सेलेक्ट करना होगा. तो वो ड्राफ्ट सेलेक्ट कैसे होगा? यहाँ पे न्यू में आपका सब्जेक्ट में एक न्यू आपका सब्जेक्ट है, मुझे इस ड्राफ्ट को सेलेक्ट करना है, इस ड्राफ्ट पे काम करना है. तो मैं यहाँ पे DFA 568754 पे सेलेक्ट करूँगा. मैं यहाँ पे उसे क्लिक कर रहा हूँ.
क्लिक करने के बाद वो ड्राफ्ट मुझे दिख गया। उसके बाद अगर मुझे इस ड्राफ्ट को अप्रूव करना है, मेरे पास अप्रूवल राइट्स है, तो मैं उसे अप्रूव कर दूंगा। ध्यान देंगे, एक बार आप अपने ड्राफ्ट को अप्रूव कर देते हैं तो फिर आप उसमें कोई करेक्शन नहीं कर सकते हैं। अगर आपको इस ड्राफ्ट में कोई भी करेक्शन करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली क्लिक ऑन द एडिट बटन। यस, क्लिक ऑन द एडिट बटन and click on the Word file. Download Word file button. Now your draft is downloaded. So open this in Word, edit it and click upload again and select the edited draft. वो ड्राफ्ट जिसमें आपने चेंजिंग किया है उसे आप सेलेक्ट करिए और उसे फिर से अपलोड कर दीजिए। तो इससे आपका जो प्रारूप है उसका वर्जन चेंज हो जाता है। उसके बाद अपडेट पे क्लिक करिए, क्लिक ऑन अपडेट। यस, दिस इज द ड्राफ्ट यू हैव मेड चेंज। ठीक है, अगर आपके पास अप्रूवल राइट है इस ड्राफ्ट का, अगर आपको अप्रूवल अथॉरिटी है, इफ यू हैव गॉट द अप्रूवल अथॉरिटी, प्लीज सिंपली क्लिक ऑन द अप्रूव बटन। यस, yes, we are getting a confirmation dialog box. It is saying once draft gets approved, no further changes can be made. Would you like to proceed? एक बार ड्राफ्ट आप अप्रूव कर देते हैं तो उसमें आप कोई भी सुधार नहीं कर सकते, इसीलिए अप्रूव करने से पहले ड्राफ्ट को पूरी तरह से अच्छी से चेक कर लें। तो यहाँ पे हम लोग यस करेंगे अगर मेरा ड्राफ्ट सही है तो। चलिए, जैसे ही मैंने यस किया, अब देखेंगे यहाँ पे आपको इशू नंबर मिल गया। तो यहाँ ई ऑफिस में आपको डायरेक्ट इशू नंबर सिस्टम जनरेट कर देता है। मैनुअली इशू नंबर देने की कोई ज़रूरत नहीं है और ड्राफ्ट का स्टेट यहाँ पे आपका अप्रूव दिखा रहा है। और देखिए इशू नंबर यहाँ पे लेटर पे राइट कॉर्नर में आपका आ गया I/39588 ये आपका इशू नंबर है। ठीक है, और ये क्या है, ये आपका फाइल नंबर है। फाइल नंबर लेफ्ट साइड में और इशू नंबर राइट साइड में। अब देखिए नेक्स्ट हमारा काम है ई साइन करना। सो फॉर डूइंग ई साइन क्लिक हियर। So here are two options, custom and default. So make sure to select the custom option because we have to customize the sign according to our will. Default select नहीं करेंगे नहीं तो आपका साइन एक कोने में आ जाएगा। तो कस्टम सेलेक्ट करिए, कस्टम विथ OTP। तो जैसे ही मैंने यहाँ सेलेक्ट किया तो मेरे पास कस्टम साइन करने का ऑप्शन आ गया। इसको आप यहाँ से बड़ा कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप पेजेस देख सकते हैं। अगर ड्राफ्ट पे आपके 2-3 पेज है तो यहाँ पे आप पेजेस पे स्क्रॉल करके आगे पीछे जा सकते हैं। उसके बाद जहाँ पे आपको साइन करना है तो आपको एक बॉक्स बनाना होगा। आइए हम लोग यहाँ पे एक बॉक्स बनाते हैं। देखिए ये बॉक्स मैंने बना दिया। ठीक है, ये आपको बॉक्स बनाना है। ये क्रॉस, ये जो क्रॉस है माउस है, इसे मैंने बॉक्स बना दिया। फिर इसके बाद क्या करूँगा, I will click on the sign button. Okay, so here we have to enter the last 3 characters of our Aadhaar. Click here and click on the OK button. So now it is directed to the CDAC e-sign authentication page. So click here the OTP, get OTP. Now the OTP is sent to my mobile. Yes. So this is the OTP. Okay, I've entered the OTP and click here, click on the submit button. Okay, okay, yes,
So the draft is now signed. The Look at the state of the draft. It is signed. Let's check. Yes, now it is showing digitally signed. Okay, now it is showing digitally signed. So let's send back this file. If you want to see your noting, simply click on the file number here to see your noting if you want to review it, or you can also click on this home button, file home button. Okay, so I will click here to see my noting. Okay, this is my noting. Okay, so now this is my noting. Okay, this is the list of letters. Okay, to see all the letters you have to click on all button. Okay, you can see all the letters of your file from page 1 to last in all. सारे पेजेस को शुरू से अंतिम तक देखने के लिए ऑल पे क्लिक करेंगे। ड्राफ्ट को देखने के लिए ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। देखिए ये हमारा ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट है जिसपे मैंने अभी साइन किया है। इस पे आपका डेट भी ऑटोमेटिकली आ जाता है। सो डेट एंड टाइम बोथ आर ऑटोमेटिकली mentioned. Okay, now to send this file to your user, to send back you can use the send back button, or if you want to send to a specific user, simply click on send button, click on the to button. Okay, is the to box. Now mention the username. Suppose I want to send to Mr. Anand Kumar. I will write his name, and his name is suggested. I will select his name. Okay, I can write some remarks if I want. Okay, I can choose some action. It is approved. Okay, some priority. Okay, or you can leave it blank. Okay, now send it using digital sign. So click on e-sign OTP. Now similarly mention your Aadhaar last 3 digits. Click on OK, and you will be sent to Aadhaar authentication. Okay, click on get OTP. Now the OTP is there. Okay, enter the OTP and click on submit button. Okay, so your file is successfully sent. Okay, now you can see it in your sent page. Okay, okay, in sent page you can see your file. Okay, so thank you.